question thila. Question regarding error correction. Whatever questions were there, I think I can solve today. As a error correction regarding, please keep your pen and paper ready besides you. Pen and paper ready करके रखिए पहले. 30 minutes of class. Within 30 minutes, I'll try to make you understand actually what are the rules that are coming in error correction. And as I've told you, top 20 rules. 20टा जो rules अच्छी, जो 20टा rules regarding error पाखापाखी सबु परीक्षा maximum परीक्षा रे आसुची, सेही 20टा rule आज हम डिस्कस करिबा. Those 20 rules in this class. So let me start. Rule number one is there. One is what? Sequence of tense. Pratham jinso. Sequence of tense. Sequence of tense. Error correction ro prathama kamo. First rule. Prathama niyama is what? Sequence of tense. Sequence of tense. Pile sequence of tense koile kono. Okay, let me adjust it. Okay, I think it's okay now. Yeah. Okay. So the first rule, what is it? Sequence of tense. Pile sequence of tense koile kono. Tense को पैटर्न रे टेंस टा व्यवहार हुए प्रथम कथा. सपोज देयर आर टू क्लॉजेस. दुईटा क्लॉज अछि. If the rule says, or the sequence of tense says that if the main clause is in past tense, then whatever subordinate clause is there. किरोसिन ब्लर हेई नहीं बेटा, टिके ताकू माने ये पिक्सेल बढ़े की देखो. If the main clause is in past tense, मन रखिबा. If the main is in past tense, then whatever thing you are writing doesn't matter. Whatever things is there, you are to write it in past tense. Subordinate clause must be in past tense. If the main clause is in past tense, your subordinate clause must be in past tense. Because why? The reason is why? Because the meaning depends upon the main clause. The meaning depends upon the main clause. Okay. Then, if the main clause is in present tense, your subordinate clause can be used, in any tense, whatever tense you can write. So these are the two sequence. These are the two sequence we have to follow while correcting error. This is the first rule. Prathama rule hala regarding sequence of tense. Okay. Let's go to rule number 2. मु कहिछि 20टा rule ही डिस्कस करबी. 21 नंबर rule को जीवी नहीं. Yes वर्षा, yes. तो आमे वर्तमान जीवा पिले कोठी की rule number 2. एटा होछि 1 नंबर, जीवा आमे 2 नंबर ऊपर को. 2 नंबर पिले पाके पाके 100 passages. These are the rules, most appropriate rules that are coming in maximum passages. I have churned out these rules. Okay. So number 2, agreement of verb and subject. Agreement of verb with subject. What is it? Agreement of verb with subject. मन रखिबा. Agreement of verb with subject. Second rule. कौन है? What is it? याकू इंग्रजी भाषा रे, स्ट्रक्चरल भाषा रे कनकर्ड बोली मध्य कहा जाए. It is called concord. कौन कहा जाए? इंग्रजी भाषा रे याकू CONCORD बोली कहा जाए. Concord. Agreement of verb with subject. बहुत सहज, ताकू डिफिकल्ट करा जाए. बहुत सहज, बट याकू टीचर माने डिफिकल्ट करी दियंते. Nothing is there. English is nothing, as you know. So, what is the rule behind this then? The rule is that subject, PS stand for plural subject, plural verb,
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बहुत सहज बहुत सहज बहुत यस प्लूरल सब्जेक्ट पीएस प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बहुत सहज वेरी वेरी इजी ये कौन हुए प्रॉब्लम वेयर इज द प्रॉब्लम देन कहीं पिला भूल करती कहीं पिला भूल करती यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पाखे कहीं भूल हुए रिजन कौन जदि एत सहज कहीं भूल हुए आमे लिखिदवा कौन पिले ही लिखिदवा तापर हैव लिखिदवा ही लगी हैव लिखिदवा एटा एग्री हैला कि पिले ही हैव एटा एग्री हैला कि जदि ही आगे हैव लगेवा एटा एग्री होउछि कि इज इट डू यू थिंक सो द वर्ब एग्री दिया नो एतरे एग्री हो नहीं यस कहीं द रीजन कौन व्हाट इज द रीजन मु लिखिदेवी से भाया मु लिखिदेवी यही जगह तो नॉर्मली भूल करते नहीं पिला बट जितेबले मु लिखिदेवी राम यही जगह पिला एठी भूली जाती पिला केवल गोटे जिनस मन रखती जे ही आगे केवल हैज लगे आउ बाकी जो रहा बाकी सब आगे कौन लगे से जानते ना दिस इज द रीजन ही आगे हैज लगे एति पिला जानी आउ आगु को कौन हम से पिला को जना ना दे डोंट नो दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस इज द रीजन व्हाई दे आर मेकिंग मिस्टेक यस किरसिंधु इट मस्ट बी राम हैज because ram is also a third person singular number as he is your third person singular number ram is also third person singular number so there are three persons in english we know first person second person and third person you will go for that I is your first person he is your second person and they is your third person so like this all the names in english are also third person all the names in english are also third person so whenever there is a name you must write a singular verb a singular verb जेतेबेले ना लिखुच गोटे सिंगुलर वर्ब तुम व्यवहार करवा कथा इफ यू आर पुटिंग हैव आफ्टर नेम्स दैट इज रॉन्ग सो दिस इज रूल नंबर 2 द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट ठीक ठीक आगु को जबा आउ कौन हुए पिले तापर आसला पिले नाउन प्लस नाउन बहुत frequently in maximum passages such type of errors are there what is it noun plus noun noun plus noun दुईटा noun गोटे पाखरे व्यवहार हेई पारिबो नहीं मन रखिबा this is the error that you have to identify तुमको identify करिवार अछि getting me नाउन प्लस नाउन जदि सर एमिति जदि थिबो आमे कौन करिबू यस बेटा वर्षा एई केस रे व्हाट शुड वी डू वी आर टू मेक ए नाउन एडजेक्टिव एई दुईटा नाउन भितरु गोटे नाउन को आमे एडजेक्टिव करिबा वी आर टू मेक इट एडजेक्टिव गेटिंग मी दिस इज रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 okay let's go rule number 4 rule number 4 is there modal plus base look modal plus base 4 number rule number 4 modal plus base कौन व्हाट इज इट सर आप लिखी देले modal plus base एटा कौन एक्जेक्टली modal plus base टा कौन पिले मॉडल मु आज मॉडल रो क्लास करी 11टा बेले मॉडल रो क्लास करी जार जार डाउट अछि 11टा बेले मॉडल क्लास करबा हम फर्स्ट ईयर क्लास रे मॉडल क्लास करी तो मु एठी मॉडल विषय बेसी को नै कारण नेक्स्ट क्लास अछि मोर 11टा बेले तो मॉडल प्लस बेस व्हाट इज मॉडल प्लस बेस मॉडल आमे समस्ते जानिछे देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश 13टा मॉडल वर्ब अछि देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश व्हाट आर दोस 13 मॉडल्स
shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, is to, ought to. Yes na? So these are the 13 modals. 13टा modals अच्छी आमर 13टा modals. यही 13टा modals ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ whenever we are using these modals in a sentence, whenever we are using the modal in a sentence, we must use base form after the modal. modal ପରେ ସବୁବେଳେ बेस फॉर्म व्यवहार होब जेमिति सपोज देयर इज रिटन आई विल गोइंग टू कॉलेज मोटे एग्जांपल छोटी एग्जांपल नेली आई विल गोइंग टू कॉलेज एठी कोन जे पिले विल अछि मॉडल तापर मु कोन करछि आईएनजी फॉर्म व्यवहार कर दै छी एइथेरे व्हाट विल हैपन यू आर टू यूज बेस फॉर्म. What is base form? नहीं प्रश्न उठे what is base form then? A base form is nothing but this is the root form of the verb is called the base form. मन रखिवा. A base form is the root form of verb. Root form of verb is called the base form. Remember this. So what is the root form of going then? The root form of going is go. So whenever there is modal, yes, whenever there is modal, we are to make the verb or we have to convert the word into its best form. I mean best form को परिवर्तन कर देवा. So it would be I will go to college. I will go to college. This is what? This is rule number 4. This is what? Rule number 4. Let us go. Rule number 5. Rule number 5 कौन कुहे पिले? सही modal regarding आ गोटे real नियम होला. Modal plus B plus V3 then modal plus B plus verb ing form दुईटा जिनस टिके इतु बेटा there is no dead sheet of examination. Don't ask such type of question inside the class. So modal plus B plus V3, what is it? Like he will be he will be forced, FORCED. This is another one example. Second example, you can he will be eating. Look at the example. Look at the example. What are the examples I have written? He will be forced, and second sentence is he will be eating. This the construction of this sentence. Sentence 1, you can say sentence 1 is subject plus modal plus B plus V3. Subject plus modal plus B plus V3. This is the structure, isn't it? Then here the structure is what? Subject plus modal plus B plus ing. This is the structure. So this is what we call the future progressive tense, and it is in active voice. This is what we call the future progressive tense or future continuous tense, and this is in active voice. And the first one is modal plus B plus V3. This is what? This is your passive voice, isn't it? So don't be confused. These are the two structure where with both the structure till that much is same. এই পর্যন্ত পুরা সমান আছে. So don't be confused. এথেরে how to identify which is passive and which is active. How to identify? केमिति identify करिबा जे कोटा passive कोटा active. Confusion is there. मु सर मु केमिति जानिबे सेतरा ing लागिबो कि ed form लागिबो. What is सेटा होछि main. This is the main thing. How should we know? आमे केमिति जानिबा आमे. So गोटे जिनस मन रखिबा छोटा simple trick, simple, that
If the sentence is in passive, if the sentence is in passive, then it must have an object with by. There will be by plus after the V3 form. V3 form pore kon thibo by plus object thibo. V3 form pore by plus object thibo. But active form pore kon thibo? Active form only object thibo, by नथिबो. मन रहिला. तो एक्टिव फॉर्म रे बाय प्लस ऑब्जेक्ट नथिबो, पैसिव फॉर्म रे बाय प्लस ऑब्जेक्ट थिबो, एक्टिव फॉर्म रे केवल ऑब्जेक्ट थिबो. दैट्स ऑल. That's all. Okay. Let's go to rule number 7. 7 number rule. 7 number rule कौन पिले? What is rule number 7? 7 number rule. Rule number 7. So rule number 7 is there. Look. The article the plus school, college, hospital. Article the plus school, college, hospital. So you can write article plus school, college, hospital. ए जगह रे कौन? What is wrong then? कहीं की आसे ही प्रश्नटा? Why this type of question is coming in exam? कहीं की परीक्षा रे ये प्रश्न आसुची? कारण कौन? कहीं की आसुची? Why? The reason is that आम समस्त जानी थी आम कॉलेज रे स्कूल रे पढ़ाई थी आर्टिकल. So the normal rule says that article is not used with these words. What? School, college and hospital. Article is not used. But there is an exception to this rule. यही rule against रे आ गोटे rule काम करूची. यही rule against रे गोटे आउ गोटे रूल काम करूची. सेटा कोन? व्हाट इज दैट रूल? द इज नॉट इज मन रखिबा रूल टा. द इज नॉट यूज विथ स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल व्हेन यू आर गोइंग हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड स्कूल कॉलेज फॉर स्टडी. अटिच स्कूल कॉलेज को पाठ पढ़िबा पई जाउछ कि पढ़ाइबा पई जाउछ ताहले ता आगरु द लागिबो नाही. हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट पई जदी जाउछ, हॉस्पिटल को जदि ट्रीटमेंट पाई जाउछ ताहले ता आगरु द लागिबो नाही. बट एठी गोटे ट्विस्ट आसिला. हॉस्पिटल को मो पुअर बर्थ सर्टिफिकेट आनिबा पई जीवी, मु द लगेइबी ना नहीं? मु लगेइबी. मु हॉस्पिटल को मो बापा कौन करी? मु जाउछि गोटे कोविड सर्टिफिकेट आनिबा पई, मते हॉस्टल जीवार अछि, लागिबो ना नहीं? लगेइबी मु. This is not the purpose, sole purpose of hospital or school. What I told now. मुझे जिनस कहूली. तो जदि हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट पर्पज रे जाउछो एवं स्कूल कॉलेज को रीडिंग किंबा टीचिंग पर्पज रे जाउछो, सेही पर्पज रे जदि यूज हेछि ताहले ता आगरु द लगेबा नहीं, अलगा केस रे द लगेइबा. एटा थिला रूल नंबर 7. रूल नंबर 8, 8 नंबर रूल. रूल नंबर 8, 8 नंबर रूल कौन? 8 नंबर रूल है पिले 2 प्लस बेस. 2 प्लस बेस याकू आउ गोटे जिनस कह जाए. एटा कौन? आउ कौन कह जाए? इन्फिनिटिव फ्रेज. इंग्लिश रे स्ट्रक्चरली याकू कौन कह जाए? इन्फिनिटिव फ्रेज बोली मन रखिबा. इन्फिनिटिव दुई प्रकार, 2 प्लस इन्फिनिटिव एंड बेयर प्लस इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव एंड 2 प्लस इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव दुई प्रकार. द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. सो बहुत सहज, अरे किछि नहीं डिफिकल्ट, किछि नहीं, नथिंग इज देयर. डोंट वरी अबाउट ऑल दिस. तो 2 प्लस बेस जदि इफ आयुष्मान रे जदि राइट वर्ड को हमें करेक्ट देख पिले. एठी कौन हला? जदि कोनोसी वर्ब आगुरु 2 लगी मन रखिबा. इफ देयर इज 2 प्लस वर्ब फॉर्म, जदि 2 प्लस एनी वर्ब फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मन रखिबा. 2 प्लस द अदर फॉर्म ऑफ वर्ब
चेंज इनटू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मन रखिलो जदि टू आगे रे वर्ब रो अलगा कोनोसी फॉर्म अछि सेटा कोन हबो सेटा कोन हबो सेटा बेस फॉर्म को कन्वर्ट हे जिवो बेस फॉर्म को कन्वर्ट हे जिवो ओके नेक्स्ट रूल नंबर 9 9 नंबर नियम रूल नंबर 9 कोन पिले 9 नंबर रूल नंबर 9 इज देयर 1 इज फॉलोड बाय 1 मन रखिबा बहुत बहुत सारा पैसेज रे आछि ये प्रश्नटा पिले 1 इज फॉलोड बाय 1 पिले एतिकी भी कहि दोची ए वीडियोटा गला परे यार कॉपी भी अवेलेबल हो मार्केट रे यार कॉपी भी मार्केट रे अवेलेबल हो बहुत लोक या ए वीडियोटा देखि कि या ऊपर वीडियो करिवे आई नो स्टिल नो प्रॉब्लम 1 इज followed by ones yes that thing 1 is followed by ones you are correct both sir so it come हुए 1 is what 1 is a pronoun 1 is a pronoun 1 is a pronoun तो एठी मु जदि लिखिबी 1 must do one's work मु लिखिबी 1 must do one's work एठी जदि his लिखि देबी if I'll write his ताले भूली जीवो 1 must do his work 1 must do one's work बेटा सेटा भी मोर ही वर्जन थिला YouTube रे you can search it Barsha you can search it in YouTube that was the first video of mine whoever is telling after my videos so 1 must do one's work 1 must do one's work so this is the rule next let us go 1 the pronoun or say object जेतेबेला हबो सेटा भी once हबो next rule is there what is it the plus abstract noun is always wrong the article the agere केबे भी abstract noun लागिबो नाही the agere abstract noun लागिबो नाही you can't use the agere abstract noun lagibo nahi abstract noun कहले कोन पुडी प्रश्न उठे abstract noun कहले कोन the noun or the name of feeling action state condition etc जेमिति knowledge जेमिति knowledge जेमिति power we can't see knowledge we can't see power so these are the condition in which you mustn't use दी नॉलेज हेले भूल हो कि सिंधु दी नॉलेज लगिबा नहीं ओके नेक्स्ट आ गोटे रूल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को नहीं कि आसे पिले एम इज आर प्लस v3 is passive and m is r plus ing is active m is r plus v3 is passive m is r plus ing is passive look at this ए केस रे कोन हो पिले m is r plus v3 दुईटा स्ट्रक्चर हमें मु सेठी पई कहे पिला मन को इनसाइड द क्लासरूम देयर आर 21 टेंसेस इन इंग्लिश इंग्रजी रे 21 टा टेंस अछि देयर आर 21 टेंसेस व्हाट आर दोस 12 tenses 12 active tenses are there 8 passive tenses are there 12 active tense and 8 passive tenses are there तो एठी हमको दुईटा टेंस टाकू मने रखिबा को पड़िबो सो केमति हाउ टू रिकॉग्नाइज करबा हाउ टू रिकॉग्नाइज सो सिंपल सो इजी m is r plus v3 then by plus object that is passive m is r plus v3 plus by plus object that is passive m is r plus verb ing then object that is your active isn't it so don't do mistake in this condition next much plus v3 and very plus ing मन रखिबा much plus v3 and very plus ing much
plus v3 and very plus ing এটা কোণ what is this স্যার কোণ লিখিলে ଆପଣ হ্যাঁ much plus v3 then very plus ing এটা কোণ নাই what is this তো পিলে much suppose look suppose if you are using an adjective after much, if you are using an adjective after much, then suppose I am taking an example interesting interest 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 I am jani che interest is a noun interest e kono noun interest hochi noun it is an abstract noun but if I write I'm much interested not much interesting I'm much interested yes much interested and very interesting very interesting these two adverbs much and very they normally take their different form when they are used inside a sentence. This was what? This was rule number 12. Let us go rule number 13. Rule number 13 13 number नियम rule number 13 कौन बिले what is rule number 13 rule number 13 हला yes what is it let me see yeah all plus the plus noun this is rule number 13 13 number rule 13 number rule टा कौन all plus the plus noun all और noun जदि अच्छी whenever all plus noun is there that means if you are writing all boys of my class all boys of my class if you are writing all boys of my class this is wrong so what should we write all the boys this is what we call collocation yes Swayam Baba you are asking some question I forgot to answer your question I want to tell you these are called colloquial sentences colloquial words and in English colloquial words means which words will take what it is pre-decided that's why so all the says all the boys of my class all boys jodi lekhucho bhul he jibo all the boys of my class okay this is what rule number 10 rule number 13 let us go rule number 14 14 number प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर प्रश्न कौन बिले 14 नंबर रूल 14 नंबर रूल होची बिले प्रीपोजिशन प्लस ing पिले मैक्सिमम माने 100टा पैसेज रु 98टा पैसेज रे एई जिंसटा फॉलो होईची मन रखिबा दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट रूल 100टा पैसेज जदि देखिबो 98टा पैसेज रे तमे निश्चित भाबे एई यार गोटे रिगार्डिंग एरर गोटे पाइबो जेमिति प्रीपोजिशन प्लस या को कहै पार्टिसिपल कोन पार्टिसिपल और वर्बल जेरेंड भी कहा जाए ताकि जेरेंड और वर्बल नाउन एतरे कोन हुए जदि प्रीपोजिशन सपोज in doing show for doing show and in describing like this so ing form you are to use जेकोसी जदि प्रीपोजिशन अच्छी तापर गोटे वर्ब आमे लगेइबा एंड इफ वी आर मेकिंग अ वर्बल फ्रेज देन वी आर टू यूज दिस स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन परे जदि वर्ब अच्छी से वर्ब टाकू आईएनजी करिबा तापरे क्वेश्चन नंबर 15 रूल नंबर 15 नंबर नियम पिले 15 नंबर नियम कोन 15 नंबर रूल कहूची रूल नंबर 15 कहूची गेट गॉट प्लस v3 गेट प्लस गट पर वर्ब जदि व्यवहार करछे ताहले तार v3 फॉर्म व्यवहार हबो गेट गट प्लस v3 फॉर्म गेट और गट जदि लागिची ता आगे
V3 फॉर्म व्यवहार करवा वर्ब 3 नंबर फॉर्म। वर्तमान पिले जीवा क्वेश्चन रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 नंबर रूल कौन टाइम हो गलानी तथापि आम आज सारिबा। रूल नंबर 16 होची लेख LACK लेख लेख आगु सब द लगिबो जदि लेख ऑफ प्लस नाउन अच्छी प्लस नाउन the lack of food, the lack of electricity, the lack of nutrition, the lack of medicines, the lack of awareness, so lack पूर्वरु द लागिबो। ठीक अछि पिले नेक्स्ट जीवा आगु को। there are some verb that do not take preposition after them। किछि वर्ब अछि जो वर्ब माने तांका आगे रे preposition नियमति नहीं। there are some verb that do not take preposition after them। तांका आगे रे preposition नेबे नहीं। को verb मन रखिबा discuss, you can write describe, reach, order, tell, demand, attack, ridicule। these are the verb that do not take preposition after them। कौन कौन बहुत माने मन रखिबा डिस्कस आम समस्त डिस्कस ऑन डिस्कस अबाउट व्यवहार करूँ एटा भूल। देन यू कैन राइट डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रीजनेबल एंड रिडिकल। दीज आर द वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड। तापर आला पिले आउ दुईटा जिंस एमंग एंड बिटवीन यार व्यवहार एमंग एंड बिटवीन। रूल नंबर केते रूल नंबर है तुम 18 एमंग एंड बिटवीन। एमंग टा समस्त माने ऑल, बिटवीन टू बिटवीन टा दुई जन व्यवहार हुए, एमंग टा कौन समस्त व्यवहार हुए, एमंग टा समस्त व्यवहार हुए। 19 नंबर रूल होची बीइंग प्लस V3 बीइंग प्लस V3 important rule in English। whenever being is there being plus V3 is there, being plus V3 तो being जते लगी सेंटेंस रे ता आगे कौन लगेबा आमे V3 लगेबा। आउ गोटे कहूँ बिले 20 नंबर नियम 20 नंबर कौन बिले एटा भी बहुत जगह होची बिसाइड्स एंड बिसाइड्स। बहुत पिला कंफ्यूज बिसाइड्स एंड बिसाइड्स। what is the difference between these two words? We are confused with this besides and besides। what is the difference? So as you know beside कहले by the side of पार्श्व रे एंड beside कहले except व्यतीत। s जदि लागिची सेटा होची except and without s that is what by the side of पार्श्व रे। ठीक अछि आउ किसी कहबी कि पिले आउ गोटे कहबी कि मो हिसाब रे आउ गोटे। डू यू वांट टू लिसन अनदर रूल? आउ गोटे छोटिया जिनस मन रखिबा लाई एंड ट्रुथ। ए दुईटा शब्द सब बेले लाई आगरू ए लगे आउ ट्रुथ आगे कौन लगे द लगे। मन रखिबा इंपोर्टेंट नियम गोटे लाई आगे कौन लगे ए, ट्रुथ आगे कौन लगे द। मन रहा सो ए लाई एंड दी ट्रुथ। सो होप यू एंजॉयड क्लास टा भल लगी थो तुमको। तो या ऊपर पुणी क्लास करबा एरर करेक्शन पैसेज करेक्शन केमिति करबा ऊपर हम क्लास करबी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास 11टा बेले मॉडल ऊपर क्लास अच्छी। सी यू देयर। आ संध्यारे तो क्लास रेगुलर होची 6:30 बेले आर्ट्स पिलांक पई क्लास होची। बाय बाय।